So in this video हम learn करेंगे about linear regression. This is the most basic form of AI model. This is used to predict values in linear fashion. So let me give you a simple example when you should use it. So let's say you have some stock prices, right? It can be any values, some integer values, right? And these are the past values. Now usually not exactly with stock, but usually these values might follow or might not follow some linear fashion. By linear formula I mean एक ऐसा algebraic formula जिसमें highest degree is 1. So for example 3x plus 4y plus 9z plus 8k is equal to 9. So this is one linear formula. इसका कुछ ग्राफ होगा which may or may not be found by Google, but इसका कोई ग्राफ होगा which would be very linear, like it would be lines. And what this linear regression helps us is it can give a large amount of data without knowing this formula. If I just give it some data, large amount of data, it can try to formulate कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, and once it knows that, then next value prediction will just be another point on that graph moving in y direction, right? So इसका use case is mostly to predict next values, and yeah, that's a major use case of linear regression, and we will be using neural net to train our linear model, right? So let's copy some libraries that we will require and create a simple model which is basically just nn.linear. Let's take now this thing takes inputs कि कितने input तुम दोगे, last कितने input, right? So let's take 8 inputs and then the number of neurons कि कितने neurons do you want. So I'll have, let's say, 3 neurons. Okay, so here the model would look something like there would be input 1, input 2, input 3, input 4, and then till input 8, right? And then there is neurons. So neuron 1, neuron 2, is there a way I can, yeah, neuron 2, and then somewhere neuron 3, right? Now from basics of neural net we know that these neurons, all these neurons are connected to the previous layer. So if I were to show how this would look like, I can just take a picture and yeah, so if you see this, and I can draw on this, yes I can. So this input 1 will be connected to neuron 1, similarly input 2 will be connected to it, input 3, input 4, and so on. Like all this input should be connected to neuron 1, then same goes for neuron 2. So all the inputs will also be connected to neuron 2, and this input, this will also be connected to neuron 3. So all these are interconnected neurons, and this is something how this would look like. So these all would be connected, and all of these would be interconnected, right? Now if you know, so how the neuron works is neurons have weights and bias, right? So weights in this scenario or in any scenario depends on कि कितने input आ रहे हैं. So this neuron will have 8 weights, weight 1 for input 1, weight 2, weight 3, up till weight 8, right? And it will have one bias, so bias 1. Same goes for this will have weight for same thing, and same thing here, right? And same thing here, right? Now if you
see there are number of parameters associated with neuron 1, 2 and 3. तो ये चलता कैसे है is जब neuron 1 goes, the input 1 goes into neuron 1, so all the weights gets multiplied by this input. So let's say our input is 2, so 2 into w1, तो ये कुछ ऐसा होगा 2 into w1 plus 2 into w2 ऐसा जितना दिखा रहा है ये w. So all the weights and biases into inputs, and then there is a bias addition, right? So ये is something that gets done, that we want to do, कि all the I1 gets multiplied to the neuron 1 का weight and added to the bias, and then based on this what happens is neuron gets some value, this value that it just received, right? And then we have some output. So let's say our input initially was 8 times 1, right? So this is 8 times 1, and let's say our output that we want for this is all zeros. Since we have 3 neurons, so output ka size will be 3. So this is the output we need, right? So we gave input 1, we want 0. यहाँ पे n1 got some value, right? Value 1. This got some value, and this got some value. So this value अगर ये 0 ही हुई somehow, let's say किसी तरीके से these values got multiplied and all, and initially ही 0 आ गया, so there is nothing to learn for this neuron right now, right? But n2 or but अगर ये कुछ different आता है, let's say this value 1 comes some other value, let's say 0.2, तो now this neuron has to learn कि मुझे 0 चाहिए, and अभी मेरा 0.2 है. I can use some way to figure out कि कितना loss था. A loss in this case would be 0.2 minus 0 or 0 minus 0.2. That would be my loss, कि मैं कितना दूर हूँ अभी from the required output जो कि 0 है prediction. और फिर same I will do for इसका कि v2 minus 0.2, and I'll do this. This is my loss, right? So I'll figure out this loss कि कितना loss है, and then जितना भी loss है I'll do a back propagation, जिससे क्या होगा कि वो सारा loss will propagate to the entire network. It will tune these weights in such a way using maths and like it gets a gradient, and basically it will just tune these weights in such a way कि they get a desired value, कि next time when I give this input or any other input, it tries to get as much as near to 0, right? So that's the training I'll do, कि I'll keep on putting some input values and try to optimize the loss and lesser the loss, so that my model gets trained and I get values as near as 0, right? So let's do this exercise where we will have some input, right? So first let me just initialize the model. Where is the issue? Okay, NN is not defined. Okay, sorry. Let's run first cell, second cell. It's linear, yeah. So we get the linear layer, linear model, a 8,3 model here, and now we have, let's take some inputs. So input for our case, let's say, is torch.tensor, and we take some really simple input for now. Yeah.
So we just have an input of 2 2 2 8 times. So this is our input 1 2 3. So this is our input, and our y, this is our x, the input, and our y, which is the result, which I want it to be. We can take any random value. So I'll take, let's do rand here. We will take 8 random inputs, right? And we will want this input to get to 5, value 5, right? Now if I just print the shape of these, x dot shape comma y dot shape, so we have the input of size 8 and output we required of y, right? So this is the x is what we want to feed in, and we want to get some this model to learn to output y. Okay, so we will, now what we need is a loss function and an optimizer. So the work of this loss function, like I mentioned previously, is to subtract what or to figure out a loss कि कितना आना चाहिए था वैल्यू एंड कितनी आई है, right? So in this linear regression case, it's very simple. We can just subtract and use the sum of the subtracted square to figure out a loss. But there are multiple loss functions. There are many different ways to figure out loss. But इस केस में a simple loss function like a ms, mean squared loss, would be good enough. What an optimizer does is it takes that loss. Let's say हमारा loss आता है, let's say 9, which is very high loss, but let's say we have a loss of 9. ठीक है? Now all these weights and biases has to be shifted in that vector space into a right direction, so that next time when I rerun or when I run this model, मेरा output सही है, right? So all these weights and biases has to be tuned, right? जो करता है optimizer takes a learning rate, right? And it knows loss कितना आया है, and when you get a loss and you do a loss, तो हमें to get to this loss we have done some mathematical operations which are perfectly differential, right? So अगर हमारा loss let's say 9 आया है, which is based on some mathematical, like इधर हमने बस प्लस किया है, ये this mathematical operation I did, right? इसके बाद if I calculate loss, वो भी एक mathematical operation है, which is mean squared, which is like दोनों को subtract, value और उसको subtract करना. तो if you know differential, like all these values are differentiable. तो if I know a loss of 9, then I know कि इस W1 या इस W1, इस W3, इस W8 को, इन सारे weights and biases को कितना tweak करूँ कि मेरी ये value कम हो. That's how differentiation work, right? कि ये इसको differentiation से मुझे पता चलेगा कि ये value कितना impact कर रही है मेरे इस loss को, right? And इसको मैं कितना change करूँ, किस direction में, इसको plus करूँ या minus करूँ, कितना direction में कि ये 9 जो है ये कम हो जाए. This I'll know through differentiation. तो when I do a forward propagation, which basically means कि मैं ये W1 multiply करके एक loss सारी values निकाल रहा हूँ, predictions कर रहा हूँ, this is called forward. तो जब मैं forward जाता हूँ, forward computation करता हूँ, तो I get some value out. फॉर एग्जाम्पल इस केस में 5 मुझे ये चाहिए, बट कुछ आउटपुट जो भी आएगा, लेट्स से मेरे स्टार्टिंग में आउटपुट कुछ रैंडम आउटपुट आता है 1 2 3, ठीक है? अब मैं उसको कितना चेंज करूँ, और फिर मैंने उससे लॉस निकाला, और लॉस निकालने के बाद मुझे पता लग गया कि भाई कितना इस वेट्स को चेंज करूँ ताकि मेरा जो वैल्यू है वो 555 के नियर है. एंड देन I'll just apply that thing कि अपने वेट्स को, अपने बायसेस को, और जितने भी मैंने और कैलकुलेशंस करे हैं उनको, अब ये ऑप्टिमाइज़र विल डिसाइड कि कितने लर्निंग रेट से I'll shift them. ओके, तो
in short, what this would mean is कि I'll show you. So we have an optimizer which is we will use stochastic gradient descent, which is fine normal optimizer. The idea is कि ये learning rate for our case let's say 0.01. तो ये जितने भी वेट्स एंड बायसेस है इसको 0.01 रेट से वो शिफ्ट करेगा, लाइक इट विल ट्रांसफॉर्म दैट इनटू दैट डायरेक्शन ताकि लॉस कम हो. आई विल शो यू अगेन. तो फॉर लॉस फंक्शन लेट्स यूज मीन स्क्वायर्ड लॉस like we mentioned. That would work in this case. It's a very simple loss function. ये बस जो वैल्यू आनी चाहिए थी और जो आई है उसको सब्ट्रैक्ट करके इट विल फिगर आउट कि कितना लॉस है. ठीक है, तो हमारी लॉस फंक्शन है, ऑप्टिमाइजर है. नाउ व्हाट वी विल डू इज लेट्स रन सम run a loop of 1000. अब बट फर्स्ट आई विल डू इज फॉरवर्ड पास. लाइक आई मेंशन कि इसके अंदर व्हाट वी विल डू इज गिव दिस x जो हमारा वैल्यूज़ है रैंडम वैल्यूज़ टू द मॉडल. क्योंकि 8 इनपुट लेता है तो वी हैव दिस शेप ऑफ 8. वी विल गिव इट टू दिस मॉडल and it will predict some value. Let's print this value कि अभी ये क्या predict कर रहा है and break. ठीक है, you see अभी कुछ negative and positive values predict कर रहा है which is very not very correct, right? Now once I know this predictions I can calculate the loss, which is again mentioned very nicely here कि what I can do is I'll use this loss function. इसमें मैं अपने predictions भेजूँगा कि क्या आए हैं और मेरा y वैल्यू मुझे चाहिए क्या. सो आई केम आउट एज 0.7181 दिस एंड दिस एंड मुझे चाहिए था 555. सो इट विल यूज दिस मीन स्क्वायर मेथड टू फिगर आउट अ लॉस. लेट्स प्रिंट दैट लॉस. we have to do loss dot item because it's even that would work but it is just an harder to check. So loss अभी is 25.8181 which is a very very high loss क्योंकि our model is currently random. It haven't taught itself anything, right? So this is the loss right now. Now when I do loss dot backward, now what this will do is see loss calculate करने का again like I mentioned is all of these numbers that we got calculated to come out to the loss, ये सब differentiable है, right? So what backward will do is go through all these weights and parameters, ठीक है, and it will nudge them in the direction कि अगर let's say this weight is positive 20, I'm just taking some random value. So इस weight का इस loss पे क्या effect है that you can figure out through differentiation which this will do. and फिर let's say कि इसका positive effect है कि अगर ये weight को मैं और positive करूँ तो ये loss कम होगा, ठीक है. तो this loss dot backward will only calculate the gradient कि इसका gradient क्या है, इसका gradient क्या है, इसका B2 का gradient क्या है, और इस पूरे स्टेप में जितने भी पैरामीटर्स थे उनका ग्रेडियंट क्या है. अब मुझे पता कैसे चलेगा पैरामीटर्स क्या थे. तो दिस हेयर लेट्स टेक अ लुक ऑफ कि इस मॉडल में क्या क्या पैरामीटर्स हैं. इफ़ आई जस्ट प्रिंट model dot parameters, okay, this is an object so we can just if I just print this, okay, तो अब मेरे सारे पैरामीटर्स प्रिंट हो गए. बाय नॉलेज वी नो कि इसमें 1 2 3 8 16 24 25 26 27 पैरामीटर्स होने चाहिए. सो लेट्स काउंट देम. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 24 25 26 27. तो इस पूरे मॉडल में 27 पैरामीटर्स है जिनको हम ट्वीक कर सकते हैं एंड ताकि हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से करेक्ट वैल्यूज़ दे, राइट. तो ये तो इसके पैरामीटर्स हो गए. बट अब हमने लॉस डॉट बैकवर्ड, लेट्स डू अ लॉस डॉट बैकवर्ड. फाउंड डेटा टाइप बट एक्सपेक्टेड फ्लोट where
Okay, let me just check. Obviously, so the issue here is that हमारा जो x and y है, ये जो y है इसका data type is integer but it should be float, right? So we reinitialize our x's and y's, we reinitialize our loss function, we print those things to those weights of the model again. Now if I just print um, the loss again, so अभी भी loss 25 है, which is pretty high. But now if I also print, let's say model dot parameters, okay, it's a tensor object, so if I do 0.0 0 generator, okay, obviously it's a generator, so I'll have to do something like this. What I'm trying to show is हर in when I do loss dot backward, तो इन सब वैल्यूज़ का एक ग्रेडियंट निकलता है कि ये वैल्यू कितना इफ़ेक्ट कर रही है इस लॉस को. लाइक इस वैल्यू का इस लॉस, इस जो 25 लॉस है हमारा, उस पर क्या इफ़ेक्ट है. क्या ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इस लॉस को? अगर हाँ करती है तो किस डायरेक्शन में. अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये लॉस कम होगा, अगर मैं इसको कम करूँ तो ये लॉस कम होगा. तो ऑल दीज वैल्यूज़ का ग्रेडियंट निकलता है विच यू कैन फाइंड थ्रू डिफरेंशिएशन, राइट. एंड अगर मैं उसका इफ आई जस्ट प्रिंट दिस comma 0 right, and if I just print grade now, so so इन सब वैल्यूज़ का ग्रेडियंट होता है जो हमारे बैकवर्ड लिखने पे कैलकुलेट होता है, राइट. एंड वंस वी हैव दैट ग्रेडियंट, आई थिंक आई हैव नॉट रन दिस, इसकी वजह से अभी ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं हुआ है. बट इफ़ आई रन दिस तो इसका इनका ग्रेडियंट होना चाहिए. ओके, मे बी दिस, या सो एनी हाउ इन सब ग्रेडियंट कैलकुलेट होता है विच टेल्स कि ये लॉस पे कितना डिपेंड करते हैं. ओके, लॉस आई हैव रिटन इट हेयर विच इज़ बैड. Once I've calculated printed the loss up, now it's 26 क्योंकि I just reran it, and अब जो नए random वेरिएबल से आया वो लॉस और ज़्यादा आ रहा है, राइट. नाउ वंस आई हैव डन बैकवर्ड तो सबके ग्रेडियंट कैलकुलेट हुए हैं, राइट. और अब ग्रेडियंट के बाद व्हाट आई वांट इज़ ऑप्टिमाइजर ऑफ स्टेप वेट्स एंड ज़ीरो ग्रेड, ठीक है. सो दिस स्टेप व्हाट दिस वुड डू, अब मुझे लॉस पता लग गया तो अब ये इन सारे वेट्स को चेंज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, सो दैट मेरा अगली बार लॉस कम आए, ठीक है. एंड सो दिस ऑप्टिमाइजर विल डज दैट इन एट अ लर्निंग रेट ऑफ 0.01, ठीक है. एंड देन दिस ज़ीरो ग्रेड व्हाट दिस विल डू, इसकी नेक्स्ट टाइम जब ये रन होने वाला है तो सारे ग्रेडियंट्स को ज़ीरो कर दो अभी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आई वांट न्यू ग्रेडियंट्स एंड वो मुझे टेल करेगा कितना मैं वापस शिफ्ट करूँ. सो ऑल दोस हैज़ टू बी recalculated. एंड इफ़ आई रन इट फॉर 1000, लेट्स डू अ प्रिडिक्शन अभी कि लेट्स प्रिडिक्ट कि अभी कितना कैसा. अभी आई हैव रन इट, लेट्स रन इट फॉर 10 ड्यूरेशंस, ठीक है. आई हैव रन इट फॉर 10 ड्यूरेशंस. अब मैं प्रिडिक्ट करता हूँ मॉडल को, मैं सेम वैल्यू देता हूँ x, एंड लेट्स प्रिडिक्ट कि क्या आउटपुट आ रहा है. अब इसका आउटपुट आ रहा है 1.8, 1.18, 1.26, राइट. एंड हमारा आउटपुट आना चाहिए 555. तो मॉडल इज़ लर्निंग बट इट इज़ अभी 10 ही इटरेशन हुए हैं. तो इफ़ आई जस्ट रन इट फॉर 1000 इटरेशन, नाउ 1000 इटरेशंस के बाद सेम थिंग हैपेंड. लॉस फंक्शन बैकवर्ड करके सारे के सारे वेट्स एंड बायसेस को चेंज किया इन द राइट डायरेक्शन. एंड नाउ इफ़ आई प्रिडिक्ट इट तो यू सी इट इज़ गेटिंग 555. सो दिस मॉडल हैज़ नाउ लर्न हाउ टू गेट टू दिस वैल्यू. अब इसने इंटरनली using this weights and biases might have created some formula to figure out कि ये आउटपुट कैसा आएगा, राइट. लेकिन
Like I mentioned, stock prediction is different. तो उसके अंदर if I keep giving some x's and then the right y's, so it will again learn that regression, create a formula inside, and then I should be able to predict y's based on this.